हेलो बच्चों, आज हमें डिस्कस करेंगे एक ड्रग्स दैट इज ओपियोइड्स। ओपियोइड्स एक ड्रग से which bind to specific receptors present in our central nervous system and gastrointestinal tract. A gastrointestinal tract और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रहने वाले स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स को, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को ये ओपियोइड्स बाइंड होता है। ठीक, ये ओपियोइड्स कॉमनली देखें तो इसमें ये ओपियोइड्स में इसको बुलाते हैं कि हेरोइन, ठीक, विच इज कॉमनली कॉल्ड, और इसको क्या बोलते हैं कि स्मैक। ये कहां से आते? ये पेपावर प्लांट से आता है। वो केमिकली स्मैक, उसका केमिकल नाम क्या है कि डाइएसिटाइल मॉर्फाइन। ये डाइएसिटाइल मॉर्फाइन कैसा फॉर्म होता है? A diacetyl morphine is white, odorless, crystalline. ये मॉर्फाइन से बना जाता है। ये मॉर्फाइन से, ये मॉर्फाइन को एसाइलेशन रिएक्शन के द्वारा, एसाइलेशन, मॉर्फाइन एसाइलेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डाइएसिटाइल मॉर्फाइन। ये मॉर्फाइन कहां से आता? ये मॉर्फाइन ये लैटेक्स ऑफ पेपावर सोमनीफॉर्म से आता है। ये पेपावर सोमनीफरम ये साइंटिफिक नाम है प्लांट का, और इट इज कॉमनली कॉल्ड पॉपी प्लांट। और ये कैसा लेता है, ड्रग्स कैसा लेता है? A papaver somniferum, that is a smack or heroin, is taken by snorting through nostrils or through injections. It is taken by snorting and injection. और ये हमारा ओपियोइड्स हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के it will act on central nervous system. So when it acts on central nervous system, it acts like a depressant, and it slows down our body functions. So it slows down our body functions. Okay. And generally morphine is used as a sedative and painkiller. So it is used as generally sedative as and painkiller. So which is very useful for patients who has undergone surgery. ये इसका मेडिसिन में यूज है, लेकिन ये ज्यादा लिया तो ऐसा मॉर्फाइन, हेरोइन, दैट इज स्मैक, वैसा फॉर्म्स में ज्यादा लिया तो क्या होता है कि एडिक्ट होता है। थैंक यू।